Welcome back, team. And I hope के previous sessions में जो brief दिए गए थे, you have given a thought process on that. And Evoke Store and Evoke Prints, किस तरह एक traditional business अब धीरे धीरे एक brand में convert हो रहे हैं. This is the exact journey that we guys are going through right now. So in this session, now Jpeg will deep dive into the strategy. The first thing that we guys do before we begin with the design is strategy. So now you guys already know कि strategy क्या है, क्या importance है, but how to do it आज वो decode करेंगे with this real brief and examples. So these are real time case studies जो develop हुए हैं. So let's begin. अब I would like to begin with this wonderful quote from David Ogilvy, which says, "The customer is not a moron; she's your wife." So, as you know, everything starts with the target audience. So, in this session, we'll be covering target audience क्या है, problem statement कैसे define करना है, competition analysis कैसे है, क्या करना है, then how do you really define your positioning, then value proposition. Let's do this. And ये सारा सुनने में आपको थोड़ा hefty लग रहा होगा. And इतनी overwhelming है, YouTube पे, Google पे इतने formulas दिए गए हैं, some frameworks बनाए गए हैं. But I believe सबसे difficult काम होता है चीजों को simplify करना, which is our job. And for both entrepreneurs and designers watching this session, अपने business के बारे में एक single page पे बहुत ही crystal clear way में accurately लिखना is the task. We don't have to fill a lot of word documents to explain your business or creativity. तो आज यही देखेंगे कि कितना हम simplify कैसे करते हैं चीजों को before we move on to the design part, which will be in the next session. So brand personality, tonality, थोड़ा creative execution वाला part will be in the further episode. In this episode, Jpeg is thoroughly focusing on first cracking the right strategy. All right. So now why I started with this quote is because we feel कि target audience कोई बड़ा ही term है, हमें Google करना पड़ेगा, multiple research analysis करनी पड़ेगी. No doubt करनी पड़ती है, but things are honestly simple. I've heard senior creative directors of big agencies, they have all cracked better ideas through their life experiences by studying maybe their mom, their dad, sisters, brothers, your spouse, your boyfriend, your girlfriend, everything is around us. You are a consumer, we are a consumer. So how will you think about the product or service also matters, because you are also a consumer when you are not advertising. You are also a consumer when you are not selling your product. तो कस्टमर कोई ऐसा गूगल करना है, आपको हाइपोथेटिकल बिल्ड करना है, वैसा नहीं है. कस्टमर हम ही है. एंड that's why it's written here, she's your wife. So आप जो बना रहे हो, क्या आपके ही ऑडियंस को समझ आ रहा है? Of course, there may be a scenario she or he may or may not be your audience, which is a different case. That is a different conversation. But please keep this in mind. It is very simple. Target audience is nothing but people around you and you yourself, and everything begins with you. Now, थोड़ा quickly brief को revise कर लेते हैं before we really decode this. तो brief ये था, Evoke Store एक कंपनी है, quirky merchandise sell कर रही है. As such कोई brand story narrative कुछ है नहीं, and बस business चल रहा है, कर रहे हैं. Objective ये है कि अभी brand बनानी है, तो क्या parameters ध्यान देने पड़ेंगे. Audience we know teenagers, millennials ज़्यादा है, उसमें भी और आगे आज deep dive करते हैं. And competitors भी आज analyze करते हैं. And let's begin. So a quick just, you can see the quirky merchandise on the right hand side. Prints, it's a traditional printing, t-shirt printing business. काम चल रहा है, हो रहा है, बहुत सारे लोगों को cater कर रहा है various sectors में. And बस एक अच्छा इसका फंडा है कि minimum order quantity का problem नहीं है, आप कम pieces भी इनसे print करवा सकते हो. ठीक है, cool. So everything starts with the right brief. And in the cases when the companies are starting out, यहाँ पे तो rebrand हो रहा है, like there is a data. So you have to channelize or get the data right, because data sab data hai is the thumb rule. Every decision happens with the help of the data, and the creativity
ऐसे ही कहीं हाइपोथेटिकली आपको अच्छा लग रहा है या आपके बिजनेस क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, डज नॉट मीन कि आप वो डायरेक्शन पकड़ोगे. डेटा क्या जवाब दे रहा है इज मोर इम्पोर्टेंट. सो नाउ ऑन, whenever you interact with your client, please ask for the sufficient data. And I understand in cases जहाँ पे denial होगा, अगर data नहीं मिल पा रहा है, you will have to do a little research. You will have to do, ask, conduct surveys. We'll get on to that. But without right data and data points, you won't be able to decide the line of action further. All right. So डेटा सब डेटा है. नाउ लेट्स सी कि इवोक स्टोर में हमें क्या डेटा मिला. इवोक स्टोर में डेटा ये मिला कि हमें लग रहा था कि यार सबसे प्राइमरी सबसे इसकी ऑडियंस जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑडियंस जो है वो फीमेल मार्केट है. बट वी वर रॉन्ग. देखो मतलब अगर हम अपने अजम्पशंस पे चलते कि हाँ फीमेल मार्केट इसकी सबसे बड़ी ऑडियंस है, तो शायद हम लोग रॉन्ग मैसेजिंग करते, आगे सारी चीजें फिर टॉस पे जाती. सो व्हेन वी एनालाइज्ड इवोक स्टोर, I'll give you this data and start thinking through on it. Though the products are being targeted primarily towards female market, it is men who are buying it ultimately. The decision makers, the purchase is happening through male market. This we got to know through the 2.5 year, 3 year sales data that we have. Okay, purchase कौन कर रहा है finally? तो उसमें it was either a husband gifting a wife, either a brother gifting a sister, either a boyfriend gifting a girlfriend. So एक तो गिफ्टिंग का पैरामीटर दिखा यहाँ पे कि people are using our products majorly for gifting purpose. I'm not telling completely out of 100%. It's more than 70% people are using this for gifting purpose. And it is the men, it is the male market who is really buying or purchasing. So जाहिर सी बात है, the messaging has to be focused on this market. And major checkouts जो हैं वो tier 2 city से हो रहे हैं इंडिया के, यानी मे बी सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली के जो अंदर के रीजन्स हैं, मे बी करनाल, हरियाणा, और यू नो वेरी स्टेट्स और लोकेशंस विच आर नॉट मेट्रोस, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर नहीं, उसके जो इंटीरियर्स में जो लोकेशंस होते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, ना कि वेरी सोफिस्टिकेटेड और वेरी यू नो रिच ऑडियंस हु वांट्स टू बाय समथिंग प्रीमियम. ऐसा कुछ नहीं है. मेजर चेकआउट्स आर फ्रॉम टियर 2 सिटी. एंड उसका भी रीज़न ये निकला कि वहाँ पे क्वर्की मर्चेंडाइज का एक्सेस कम है कंपेयर्ड टू दिस लोकेशंस. लाइक यहाँ पे तो हम बाहर निकलते हैं, जहाँ पे हम मेट्रोज में अगर हम रह रहे हैं, निकलते अभी का तो पोस्ट पेंडेमिक इट्स अ डिफरेंट केस, बट यू गेट एक्सेस टू क्वर्की मर्चेंडाइज एंड क्वर्की प्रोडक्ट्स. बट यहाँ क्या हो रहा था, टियर 2 टियर 3 सिटीज में वो एक्सेस नहीं था, जिसकी वजह से ऑनलाइन वाज देयर ओनली ऑप्शन एंड दे आर प्रेफरिंग इट फॉर शॉपिंग पर्पसेस. तो एक हमें पता चला कि मेल मार्केट, उसमें भी पता चला कि गिफ्टिंग पर्पस, उसमें भी पता चला इट्स अ हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आई मीन बाइंग इट फॉर गर्लफ्रेंड और ब्रदर गिफ्टिंग अ सिस्टर. एंड ओकेशंस जो होते हैं, इधर इट्स अ बर्थडे, इट्स एन एनिवर्सरी, इधर इट्स समथिंग स्पेशल. So they are using our products to celebrate the life milestones, right? And अभी देखो ये सब डेटा पता चलना बहुत जरूरी है. And even if you are maybe you know starting out, for the businesses who are just starting out, you will have to really be strict 6 months down the line, 8 months down the line, and manage your data, because we understand that now this data would not be available अगर हम लोग आज start कर रहे हैं तो, but 8 months 12 months में आपको idea आता है. So जो businesses हैं यहाँ पे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत agile होना पड़ेगा. Agile मतलब कि don't be so, उतना stress मत लो day 1 को. The first thing that you have to do is go talk to your consumer, interact with them, see what they are telling, listen to them, start maybe सेलिंग योर प्रोडक्ट. आज चाहे जो भी स्टेज पे हो, थोड़ा बन रहा है, आप बना रहे हो उसे, कीप योर कस्टमर्स इन द प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब, क्योंकि एंड तब क्या, उसके बाद भी आपको उनको साथ में ही रखना है. बट इससे क्या होगा ना कि यू शुड नॉट गो विथ योर अजम्पशंस.
You should always listen to the market, because market will decide, and market is nothing but the people will decide that whether they need it, और उसका need है, उसका want है. Want can be a desire, need can be a necessity, कि नहीं इस तो चाहिए, इसके बिना चलेगा नहीं. Want can be a desire, कि अरे नहीं यार है बट नीड नहीं है, चला लूंगा उसके बिना. सो ये सब अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले जो स्टेप्स लेना है वो रियल टाइम मार्केट में आपको प्रोडक्ट अपना धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज, जैसे भी आपकी सर्विस है, बिल्ड करनी है, कंज्यूमर्स को साथ में रखना है, फीडबैक्स लेते जाना है, आइटरेट करते जाना है. सो इट इज वेरी अजाइल प्रोसेस. ऐसा नहीं कि वन साइडेड वन माइंडेड आपने ही अपने हिसाब से कुछ डेवलप किया एंड देन मार्केट में, देन कोई भी ब्रांडिंग हो, कोई भी क्रिएटिव एजेंसी हो, कोई भी हो, nobody will be able to position or brand or etc. a product which is not even required or maybe is not built correctly. So first go out, talk to your consumers. They are everywhere and not everyone is a consumer. Okay, so major checkouts yahan se aa rahe hain. Then what we saw was between the age group of 16 to 30 the ratio of teenagers is high, and amongst various products the panda category is a hit. तो अभी ये planned नहीं था, उन लोग वेरियस मर्चेंडाइज सेल कर रहे थे, उसमें से पीपल डिसाइडेड, मार्केट डिसाइडेड के यस, आई मीन ये जो क्वर्की प्रोडक्ट है इनका, जो यहाँ पे ये थोड़ा यूनिक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, एंड ये इजीली इतना ऑफलाइन मिल भी नहीं रहा, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चीजें मिल रही हैं वो इवोक स्टोर ट्राई कर रहा है इंडियन मार्केट्स में एक्सेस देने को, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स के काफी स्टोर्स अब बंद भी हो गए हैं, and due to the and काफी चीजें चाइना एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स ही थे, so they are now banned, so it's good for the company now. So between the age group of 16 to 30 the ratio of teenagers is high. ऐसा नहीं है कि 28-30 वाले ज्यादा ले रहे हैं, एकदम जो 16 18 17 वाले मैक्सिमम बायर्स हैं. तो अभी उनका माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है, वो कौन है, कैसे हैं, एंड वो इस कैटेगरी को, पांडा कैटेगरी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कंपैरेटिवली. ऑलराइट, नाउ सी द इम्पैक्ट. नाउ अभी आपको जो ब्रीफ मिला है प्लस आपने जो डेटा एनालाइज किया है, इट विल हेल्प यू. अभी आपका दिमाग खुलेगा धीरे धीरे कि मुझे किस डायरेक्शन में फोकस करना है अगर मुझे ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो. ओके, मुझे ये ध्यान देना है कि मेरा प्रोडक्ट गिफ्टिंग के तौर पे एक्सेप्ट किया जा रहा है. सी देयर आर वेज. Now, without experience, you cannot do this. Now, Mr. Bajetia was a very not a seasoned guy. कि पहले से उसका business model, and it's all myth, to be very honest. Everything happens when you really follow this agile process of doing things. Now, for example, if I'm launching my own product, even I kept consumers with me. Now, you guys might have experienced this. ड्यूरिंग द जर्नी के ये है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कुछ डेवलप कर रहे हैं, आई मेड श्योर कि जिसकी नीड है वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, rather than just some crop tool pen tool. So you get that. Then I know okay, now I also cannot pre-decide hypothetically on my own. So I need a group of people. I would request all the businesses to build a cohort or a community, a very small cohort, a group of 10-20 people, 15 people. Who are your who do you feel are your audience, and देखते हैं आगे उसको कैसे build करना. So in this case we have the data, and I'll just summarize what data we got from Evoke Store situation. Male market, no, male market ज़्यादा है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज हो रहा है. प्रोडक्ट्स दो आर फॉर फीमेल, आई मीन ज्यादा प्रोडक्ट्स फीमेल के लिए हैं. ऐसा नहीं है कि इट्स अ फीमेल और गर्ल ओनली स्टोर, बट ज्यादा प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी में है. मेजर चेकआउट्स टीयर 2 सिटीज से आ रहे हैं, नॉट फ्रॉम द मेट्रोस, क्योंकि उनको लिमिटेड एक्सेस है. उनका प्रॉब्लम भी समझ जाओ, उनको लिमिटेड एक्सेस है क्वाकी मर्चेंडाइज का. देन 16 to 30 का एज ग्रुप तो है, यू नो, बट 16 to 18-17 का रेशियो ज्यादा है, एंड ओकेशंस एंड लाइफ माइलस्टोन्स के लिए प्रोडक्ट ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, एंड पांडा की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो सबसे हिट है. तो इतना अभी हमें डेटा पॉइंट्स मिले. जॉट डाउन ऑल दिस डेटा पॉइंट्स. एक जो हम माइंड मैपिंग करते हैं, वो माइंड मैपिंग, ये सारे वर्ड्स लिख लो एक बार.
you will be in a very better position to think further how I want the the brand to be, the communication to be, who will be listening to it. आपको थोड़ा अभी clarity आना start हो जाएगा. And same process you have to follow for any client project, for any entrepreneurs out there building a brand. Data, start with data. Then evoke prints. Content creators and e-commerce seller was a less saturated market comparatively. अभी हम लोग ने जब देखा कि इन लोग बहुत सारा प्रिंटिंग का काम करते हैं, सबके लिए करते हैं. जो आता है टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए, ठीक है आपको करके देंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ठीक है, ऑर्डर आ रहा है, प्रिंट किया, शिप किया, 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, 500 पीस, वट एवर इट मे बी. बट उसमें हमने एनालाइज किया कि आउट ऑफ दिस एवरीबडी हु इज डूइंग द प्रिंटिंग वर्क, इट इज द कंटेंट क्रिएटर्स एंड ई कॉमर्स सेलर्स, जो ऐसी मार्केट है जो बूम भी हो रही है, फ्यूचर भी उस तरह जा रहा है, उस तरफ जा रहा है. एंड ये मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं है जितनी कॉर्पोरेट की मार्केट है. मतलब कॉर्पोरेट कंपनी के लिए प्रिंट करना और ये सब करना इज अ वेरी सैचुरेटेड थिंग. देयर आर 10 or 1,000 पीपल आउट देयर डूइंग दैट. उसमें से इनके जो वेरियस टारगेट ऑडियंस जो हमने देखे, इफ यू सी द ब्रीफ क्लियरली, corporates, brands, artists, content creators, sports organizations, NGOs, e-commerce sellers, we saw that these content creators and e-commerce sellers are someone who are the future, and the industry is going in that direction. So for a moment, if we not focus on the noise and just focus on this, the process it is to cut things. You will see that this session is very crisp. You will feel when you complete this session, it was very crisp, because that is how the process should be. You should not clutter, but start, you have to declutter and cut things down. मतलब अभी मैं NGO, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, ब्रांड, सबको बेचना चाहता हूँ, ठीक है, बेच, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देख, एनालाइज कर के कंटेंट क्रिएटर्स और ई कॉमर्स सेलर्स तेरे ज्यादा पोटेंशियल मार्केट है, उसमें इतना कंपैरेटिवली सैचुरेशन भी नहीं है जितना कॉर्पोरेट्स और ब्रांड्स में. तो देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं. प्लस द नो इन्वेंट्री एंड नो MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वाज अ की फैक्टर दैट वाज सॉल्विंग देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम. बाकी जगह पे कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रहा है. हाँ ठीक है, आई वांट गुड प्रिंट वेंडर, गुड क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, मेन स्ट्रीम है, अग्रीड, बट ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो रहा था. दे हैव 100 पीपल आउट देयर डूइंग सम प्रिंटिंग असाइनमेंट, यू आर 101, नो difference in that. But when it comes to content creators and e-commerce sellers, उनका सबसे बड़ा दिक्कत था कि यार एक डिजाइन का 50 पीस अगर मैं छापूं, सो बिके ना बिके, एंड मैं एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च नहीं कर पाऊंगा. सो काफी प्रॉब्लम्स थी उनकी भी. उसमें से हमने देखा कि हाँ, ये कुछ है कि नो, आपको MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड इन्वेंट्री आपको नहीं रखनी पड़ेगी. ये मुझे बड़ा एक की फैक्टर लगा इज डेटा पॉइंट, एज अ डेटा पॉइंट. एंड दिस इज नॉट ideated or innovated by a creative person like me. This is there in the business. It's just that we have to declutter everything and analyze, which is what we are doing right now. And for the people who are building things up now, I'm happy that we'll be building in the right way, because you know that you don't have to do 10 things at a time, which is the biggest problem. And then your messaging goes for a toss, your branding goes for a toss, and even the consumers won't understand you very well. So तीसरा ये देखा कि इंडस्ट्री जो है, सेक्टर, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग बूम हो रहा है 2016, 14, 15, 16 से 17 से धीरे धीरे ऐसे वो फेस से वो बूम होते जा रहा है, एंड वो अभी भी एमर्ज हो रहा है. तो वेव बहुत अच्छी है. हम फर्स्ट मूवर्स तो नहीं है, बट अर्ली मूवर्स है. आज भी अगर इंडिया में टॉप 50 में हम आ सकते हैं, टॉप 25 में हम आ सकते हैं, टॉप 10 में हम आ सकते हैं, rather than लाखों लोगों की जो लिस्ट है जो प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी एमर्जिंग मार्केट है. ऑल दिस हैपेंस विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग, like with your client, and I understand, see, it depends on the project magnitude, pricing, that is a different conversation. मैं उसमें नहीं जा रहा. Right now we are really studying how do you build a brand, and we are transforming a real-time business into a brand, which are actual
data points. This is no hypothetical data, actual data points which I am sharing with you. Drop shipping in India is still emerging, and we cannot, we cannot ignore this opportunity. We have to double down on this opportunity. किस तरह हम इसको leverage कर सकते हैं अपने benefit के लिए, तब जाके मजा आएगा, rather than just saying ourselves as we are printing providers, which is a problem right now. ठीक है, there will be a change in name, there will be a change in tagline, creativity बाद में देखेंगे, next session में देखेंगे. ये सेशन में हम पहले ये सारा होमवर्क क्लियर कर लेते हैं. व्हाइट बोर्ड, पूरा ड्राइंग बोर्ड बिफोर द आर्ट बोर्ड. सो दिस इज द ड्राइंग बोर्ड व्हिच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ. ऑलराइट, सो डेटा सब देता है. आई विल समराइज स्टोर क्विकली. मेल मार्केट, गिफ्टिंग पर्पसेस, लाइफ माइलस्टोन्स, ओकेशंस के लिए. प्रोडक्ट्स प्राइमरीली फीमेल्स के ज्यादा है, बट द मेन आर द वन हु आर बाइंग इट फॉर देम. Major checkouts from tier 2 tier 3 cities because they don't have much access to such quirky merchandise. Online Chinese stores etc काफी बंद हो गए हैं, तो और अच्छी बात है कि ये इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स मिला करते थे आज इंडिया में प्रोक्योर करके इंडियंस को सेल कर रहे हैं. अच्छी बात है. देन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 30, 16, 17, 18 में ज्यादा रेशियो दिख रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी गो लकी एंड केयर फ्री पीपल. तो वो अच्छे से ऑर्डर कर रहे हैं. उसमें भी पांडा कैटेगरी जो है उस पर ज्यादा फोकस करके वो ज्यादा हिट है कंपेयर टू दी अदर कैटेगरीज. नाउ कमिंग टू इवोक प्रिंट्स, आई एम सॉरी, थोड़ा दो ब्रांड्स का दो पैरेलली हम लोग रन कर रहे हैं, बट आई वांटेड टू गिव यू द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ कंज्यूमर, आई मीन डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, D2C कह लो, या बिजनेस टू कंज्यूमर ब्रांड ई कॉमर्स स्पेस में, as well as I wanted to give you experience of a service based business model. These are two different business models. One is selling the product directly to the market, another one is selling product to the businesses and then they are selling it further. मतलब e-commerce sellers हमारे clients हुए, but e-commerce sellers direct consumers को sell कर रहे हैं. तो in this case we are B2B. तो दोनों का मुझे थोड़ा एक parallel experience देना था. So थोड़ा let's buck up, but करना पड़ेगा parallelly साथ में. Okay, now of course while you will be real time working, you will be building one thing at a time. Now not everybody is your audience is the biggest conversation here. We are in the target audience segment only. Not everybody is your audience. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि था ही नहीं ऐसा पैरामीटर. ठीक है, एज ग्रुप डिफाइन कर लिया है, बट स्पेसिफिक्स नहीं है कि हु इज द ऑडियंस. इफ यू सी प्रिंट्स में भी स्पेसिफिक नहीं है कि हु इज द ऑडियंस, सब लंबा लिस्ट दे दिया. अभी थोड़ा इसको स्पेसिफिक करते हैं. एनी मार्केट हैज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टारगेट ऑडियंस. टारगेट ऑडियंस इज नथिंग बट वो लोग जो आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस कोर्स एज अ प्रोडक्ट. दिस इज नॉट फॉर समवन हु इज इनटू इंजीनियरिंग. This is for someone who is into communications, advertising, design, entrepreneurship, building their own brand, product. So, सबकी एक market होती है. So, this is my target audience. Similarly, primary, secondary and tertiary. Primary audience वो है जो directly आपका message consume करेगी. Secondary audience वो है जो indirectly आपका message consume करेगी, but वो भी important है. Tertiary वो है जो थोड़ा सोचेगी, बट वो भी आपके मार्केट का हिस्सा है. वो सोचेगी, देखेगी कि ब्रांड कैसे धीरे धीरे फेमस हो रहा है, या प्राइसिंग कैसे उनके रीच तक आ रही है कि नहीं, अभी अफोर्डेबल है, ब्रांड भी नोन है, चलो अभी मैं ले सकता हूँ. तो टर्शियरी आर समवन जो थोड़ा सा अभी डायरेक्टली नहीं परचेस कर रहे, बट समवेयर डाउन द लाइन दे विल परचेस. सो वो भी है. अभी आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. विदाउट ब्रेकिंग योर ओन ऑडियंस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, you will be confused how my social media should be, how my website should be, how my identity should be, design, color, font, whatever. So you'll be a little confused. But when you know that primarily my audience are not just female, they are male. I got this from data. So though I sell products which are female oriented, zyadatar, not just female products. My product branding, my store branding, my overall branding should not be pink or female oriented or something like that. No, because I am focusing on the male market जो females के लिए purchase कर रहे हैं. So my primary audience are those husbands, boyfriends, brothers, all those dudes out there
who are buying this product for their female counterparts. So that is my primary audience. My secondary audience is are the females and other people who are welcome, who would love the product and would like to experience the product. And my tertiary audience are someone who would still not buy it, take their own time, but ultimately they will. So we'll have to focus on them as well. But all your energies should be channelized towards primary. In Evoke Print's case, my primary audience is, so are you able to answer such questions for your own business? Ask yourself. You अब भी आपको वो एक एक करके डेवलप करना है. एंड अगर रिसर्च लगेगी, रिसर्च करो, कंज्यूमर से बात करो, सर्वेस करो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. ऑनलाइन अभी आप कितने सर्वेस कर सकते हो. लिंक्डइन से आप सर्वेस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप आस्क मी एनीथिंग कर सकते हो, आप पोल्स कंडक्ट कर सकते हो. सो कितने पॉसिबिलिटीज हैं सर्वेस कंडक्ट करने के जो आपको आंसर देंगे. आई गेट सो मेनी सर्वे मेरे को भी आता है लिंक्डइन पे. एंड अगर अपनी इंडस्ट्री का कोई प्रोडक्ट हो रहा है तो इवन आई आंसर देम सो दैट उनको हेल्प हो जाए. सोशल मीडिया के इंसाइट्स चेक करो. अगर आपने कोई चीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, पोस्टिंग आपने स्टार्ट कर दिया है, इंसाइट्स चेक करो कि क्या हो रहा है, पब्लिक क्या इस पे रिवर्ट कर रही है. क्यों पब्लिक कस्टमाइजेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही बट पांडा प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रही है. सो यू विल हैव टू रिव्यू मॉनिटर, ट्वीक, एजिलिटी जैसे मैंने कहा. यू विल हैव टू बी अजाइल एंड डू ऑल दिस. रिव्यूज एंड कमेंट्स पे फोकस करो. व्हाट आर द रिव्यूज you are getting, your competitors are getting? What are the comments? What are the negative sentiments? What are the positive sentiments? Little out of the topic, but social listening has been a big thing now, just because everybody wants to know what people are talking about the product before I launch it, during I launch, even after I launch. What are the sentiments? So social listening itna use kiya ja raha hai now. Or in our case, in our circumstance, when we are doing it on our own, I do leverage social media a lot for data. I get great amount of data from there. When I really go out, talk to people, DM people, reach out the mentors in the industry, reach out the consumers I believe will be right for this. For example, if graphic designers are my consumers, primary consumers, I will go talk to them, understand their problem. अच्छा क्या दिक्कत आ रहा है? Okay, pricing का problem. Okay, you are not able to sell this. Okay, business angle का थोड़ा ज़्यादा problem आ रहा है. Software no, software सर YouTube पे available है, I'll सीख लूँगा. So depends. So अलग अलग लोग अलग अलग आंसर करेंगे एंड 10 प्रॉब्लम्स दे देंगे. वो अलग अभी उस पर भी आते हैं कन्वर्सेशन पे. सो स्लो एंड स्टडी. You will have to conduct surveys, social media insights, reviews and comments. First thing that you do, even before you invest in any website or big social media, there is some agency reaching out to you, let's start the social media, retainers, etc. Please do all this homework first. Without doing this homework, your money it's your hard earned money, it will really be channelized in different directions. Then you have to really channelize that money in right direction. So, and even for creatives out there, I understand that you need a project, a client that really wants all these services from you. So let's not get in the conversation where अरे खाली आप वेक्टर लोगो बना के दोगे. I understand, but even we have took initiatives जहाँ पे हम लोग ऐसे briefs share कर रहे हैं अभी आपके साथ, and we have closed also fellow brand Indians, like we are sharing work within the brand Indians now. So we are trying to solve that as well, but let's not ignore the fact that this is how you have to really build or transform a business into a brand. So primary audience in Evoke Prints is someone who is a content creator and an online seller. Secondary audience, corporates, brands, all are welcome, no denial. But my primary audience are content creators and online sellers. And to begin with, you will feel, "Arey yaar, Vivek, don't you think we are losing out on customers or market?" But guys, I would say start with a niche, start with a very focused, then scale तो पकड़नी है आपको. आगे जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको स्केल तो होना ही है. तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो सके तो सिर्फ प्राइमरी पे ही फोकस करो कि कौन कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैसे, और कौन ऑनलाइन सेलर्स हैं. चलो उन्हीं पे फोकस करके उन्हीं को मैं
आगे डेवलप करता हूँ. ये ब्रांड्स कॉर्पोरेट्स यार, इनसे वही ट्रेडिशनल वे में काम करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी. सो रेदर देन दैट, चलो क्यों ना मैं सिर्फ प्राइमरी ऑडियंस मेरी इस पे फोकस करूँ, देन सेकेंडरी पे भी आता हूँ जैसे जैसे मैं स्केल करता हूँ वैसे. सो यू हैव टू deep dive thoda sa and analyze all this. With evoke prints, content creators, online sellers are primary, secondary are brands and corporates, and tertiary are all those sports organizations and NGOs and people who need products in bulk printing, etc., education institutes. But not my, मेरा messaging उनकी तरफ directly नहीं जाएगा. They are there, जब उनको जरूरत पड़ेगी, उनको लग रहा है, उनको requirement है, they will come to me and take my service. All right, so be clear in your head that this is how I should break my things down and not go all in for everyone. Then अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूजर पर्सोना क्रिएट करना, जो हम या तो मिस आउट कर जाते हैं. बहुत सिंपल चीज है, लेकिन या तो मिस आउट कर जाते हैं, टारगेट ऑडियंस का ही बात है, या फिर हम करते ही नहीं है, बहुत लेटर स्टेज में करते हैं ये बिजनेस के. सो let's begin. What is user persona all about and why it is important? And now you will see all those jargons. I'm not using jargons in this session, will be covered in this user persona by default. Problem क्या है, कौन है, competitors क्या है, etc etc. आपको यहाँ से और डेटा मिलेगा अभी. So चलो और डेटा माइंड इसमें ध्यान देते हैं डेटा पे. Now you can follow this exact user persona framework for your projects. For both, I mean, it's not a rocket science. Just sections which I have created that will help you create the user persona. And now you also know कि ज़्यादा टाइम हम ये सेशन में कंज्यूमर को समझने में लगा रहे हैं, because that is everything. Positioning, value proposition, etc. ये बहुत ही easily आपको क्रैक हो जाएगा ये सब डेटा से. अगर ये सब नहीं होगा ना, तो वो it will take lot of time for you to know what exactly I want to sell in the market or tell in the market. Okay, so I have created some, abhi yahan pe I have created this profiles which are hypothetical. Now of course you understand I cannot take real people, but they are real people, but still I have fabricated a bit. Okay, now see, take this example of evoke store. हम लोग evoke store का user persona बनाते हैं. कंज्यूमर कौन है उसको समझते हैं. ये पर्सोना आपको कंज्यूमर को समझने में हेल्प करेगा कि हु इज द टारगेट ऑडियंस. हम कहते हैं ना, हु इज क्रिश. क्रिश इज एन इम्पल्सिव ऑनलाइन बायर, always looking for quirky stuff to woo her girlfriend. So now you can replace, you can build one more. Krish is a husband always looking forward to gift his wife or something like that. So आप ऐसे और create कर सकते हो. But primarily टीनेजर्स ज्यादा हैं जैसे मैंने कहा था, इसलिए ये यूजर पर्सोना बनाया गया है. 16, 17, 18 वाले लोग ज्यादा हैं compared to 28, 30. So let's focus on them. So who is he? He is this. एज क्या है उसकी? एज 18 है. रहता कहाँ पे है? दिल्ली में रहता है. क्या करता है? कॉलेज गोइंग गाय, सर्वाइव्स ऑन पॉकेट मनी. साइड सी बात है, तो इसके लिए प्रोडक्ट्स भी अफोर्डेबल होने चाहिए बाय डिफॉल्ट. आपको अभी देखो कंज्यूमर कौन है ना, उस पर आपका फीचर्स योर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब उसी का आंसर होगा. देन he is a rebel. He is a rebel and not taking oneself too seriously. मतलब rebel है because not following the societal norms or something like that. They always challenge the status quo, or they always you see these teenagers, even we guys are millennials and young out here, we always challenge the old traditional values which we find are not apt in the society, and we don't take too seriously. मतलब लाइफ है, जीना भी है. इट्स नॉट के एवरी टाइम वी आर टेकिंग लाइफ टू सीरियसली. So he's a college going guy, survives on pocket money, a rebel and not taking oneself too seriously. Now थोड़ा बायो में इसको और expand करते हैं. A college going guy don't have much responsibilities as well and lives carefree, belongs to a regular middle class family in Delhi. मतलब कोई high fundu इससे नहीं आ रहा है. It's a very simple middle class family and shops nearly 4-5 times a month.
4-5 times a month वो शॉप करता है, एंड मेनली फॉर गिफ्टिंग इज यंगर सिस्टर, गर्लफ्रेंड एक्सेट्रा. खुद के लिए भी करता है, बट गिफ्टिंग किसी किसी और के लिए ज्यादा बाय करता है. एंड यूजुअली घर पे होता है ऐसे कि अगर मुझे कुछ चाहिए होता है या सो आई ऑलवेज सी दैट देयर इज 1 or 2 ऑनलाइन शॉपर्स जिसको बोल देते हैं, अरे भाई मेरे लिए प्लीज ये ऑर्डर कर देना. So these are the sentiments which we see. There is always, there are 4 people in the house, there will be 1 or 2 people who are buying everything for everyone. So ये एक बड़ी ऑडियंस है. एंड इसकी पर्सनालिटी कैसी है? अभी हम बड़े बड़े जार्गन्स यूज करते हैं, ब्रांड पर्सनालिटी ये वो. आप सी ब्रांडिंग क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेटेबल होना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अभी आप भी किसी से दोस्ती करोगे तभी करोगे जब आपकी वाइब्स मैच होंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपकी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं एक सिंक हो रही है, तब जाके आप में एक कॉमन फैक्टर्स आते हैं. सिमिलरली ब्रांड पर्सनालिटी जब हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, इट विल बी नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कंज्यूमर्स पर्सनालिटी कहीं ना कहीं, विथ ऑफ कोर्स द एडिशंस, वैल्यू एडिशंस दैट वी हैव टू डू. सो अब fun loving person won't love a brand who is too serious and telling you some serious messages, giving you some serious ज्ञान about life and all that. वो नहीं उसको मजा आएगा, बिकॉज वो हमारा कंज्यूमर कैसा है? हमारा कंज्यूमर बहुत ही फन लविंग है, लाउड एंड क्वर्की है, मतलब मिनिमल नहीं है ब्लैक व्हाइट ग्रे कि बस वार्डरोब में एक ही ब्लैक टी शर्ट है रोज पहनना है. सो ये बहुत ही लाउड है और क्वर्की है. आई एम नॉट द कंज्यूमर फॉर श्योर. सो मैं टर्शियरी ऑडियंस भी नहीं है. सो या पर्सनालिटी, फन लविंग पर्सन, टू लाउड एंड क्वर्की, केयर फ्री, great sense of humor, people's person, a giver and explorer. So loud है, quirky है, carefree है, humorous है. इसको ज्यादा ऐसे सीरियस बातें पसंद नहीं आती, puns, humor बहुत necessary है. हाँ ये relate हो रहा है मेरे से. Then people's person, he is very good with the people, he is not an introvert, he is an extrovert, and a giver, मतलब not keeping it to itself, he loves giving and sharing things. Of course introvert नहीं है इतना. An explorer, explore करना है, नई नई चीजें देखनी है, सीखना है, बहुत कुछ given the age उसको बहुत explore करना है अभी लाइफ में. तो ये इसकी पर्सनालिटी है. अभी इससे आपको आइडिया आएगा, एंड यू सी एज आई स्टार्टेड विद डेविड ओगिलविस कोट के शी इज योर वाइफ, मतलब इट्स a consumer is a someone who is there in your surrounding. and ये भी आपने देखा होगा ऐसा कोई बंदा जो ऐसा हो, एंड आप रिलेट कर जाओगे तुरंत उससे. मैं आज मेरी सिस्टर्स को कॉल करता हूँ कभी कभार, कुछ फीमेल ब्रांड ऐसी आ गई तो आई ऑलवेज टॉक टू पीपल एंड हैव कन्वर्सेशंस, एंड उससे मुझे जो इंसाइट्स मिलते हैं ना, वो कोई गूगल टूल्स या एनालिटिक्स मेरे को नहीं दे पाता. आई विल बी गिविंग यू द टेम्पलेट्स, टूल्स एक्सेट्रा, बट स्टिल दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हो कि नहीं. एंड मैंने जब कन्वर्सेशन किया ऐसे बंदे से, तब मुझे पता चला कि हाँ ये ऐसा है, मेरा ऑडियंस ये है. क्या आप अपनी ऑडियंस को जानते हो, इज माय क्वेश्चन टू ऑल द बिजनेसेस आउट देयर. एंड इतना डिटेल में आपको उसे जानना चाहिए. उसके फ्रस्ट्रेशंस क्या है? कांट डिसाइड व्हाट टू गिफ्ट, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन. कभी कुछ गिफ्टिंग करना है लेकिन यार पक रहा है, नहीं सूझ रहा है, नई आइडिया आ रही है, क्या करें. फेक प्रोडक्ट्स से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ क्वर्की चीजें गिफ्ट करनी होती हैं तो फेक प्रोडक्ट्स बड़े आ गए हैं मार्केट में. सो उससे मजा नहीं आता, पैसा देके भी प्रोडक्ट थोड़ा सा फेक आ जाता है. ऑफ नो यूज इफ नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम. आधी बार चीजें अर्जेंटली चाहिए होती है, कल देना है, परसों देना है, आज सूझ रहा है, आज ऑर्डर कर रहे हैं, आज तैयारी कर रहे हैं उसके लिए. इंडिया है, इंडियन कंज्यूमर है, एंड मूवमेंट वो. तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए. तो ऑफ नो यूज इफ नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम. कॉमन प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए अपने को, मतलब समथिंग विच इज कॉमन, मतलब 10 लाइन में है, हाँ कॉमन है बट क्वर्की भी है. सी देयर इज दिस पियर एंड फोमो फैक्टर आल्सो इन दिस ऑडियंस कि अरे यार सब लोग ये ले रहे हैं, मैं भी ये गिफ्ट करता हूँ. दैट इज आल्सो देयर, बट द प्रोडक्ट शुड बी एज सच देन टू क्वर्की टू डू दैट. एंड ये पांडा में डेटा पॉइंट मिला हमें ऐसा. ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स वी डोंट, ये हम लोग ब्रांड वैल्यू पे सोफिस्टिकेशन नहीं है इतना कि मतलब लेकॉस्ट का कॉलर टी शर्ट 5,000 का पोलोस हम परचेस करें. नहीं करना भाई, मुझे एकदम मस्त अफोर्डेबल
क्वालिटी भी अच्छी हो एंड मैं डे टू डे यूटिलिटी में उसको पहन पाऊँ, ऐसा मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ऐसी एक है मेंटालिटी, ये ऑडियंस भी है। वो ऑडियंस भी है जो 5,000 का कॉलर टी शर्ट परचेज करेगी। सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड योर कंज्यूमर by building this consumer persona nothing but personality. Then उसके motivations क्या है? अभी there are 10 ways to do a persona, but मैं बहुत ही simple way में दे रहा हूँ कि कौन है, उसकी personality क्या है, उसको क्या frustration है और क्या उसके motivation है। उसके motivation ये है कि भाई जो मिले affordable मिल जाए, जो हो यूनिक होना चाहिए प्रोडक्ट, सो दैट मुझे मजा आए कि यस आई गॉट दिस फॉर यू, एक फीलिंग आना चाहिए, राइट? यू शुड बी एबल टू बोस्ट ऑफ यस आई गॉट दिस यूनिक थिंग फॉर यू। यूटिलिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, खाली ले लिया एंड वो पड़ा है कहीं पे, ऐसा नहीं। इट शुड बी यूटिलाइज्ड आल्सो इन योर लाइफ। प्रीमियम क्वालिटी इज मस्ट, we need something which is utility and so you will use it for quite a period of time. So quality is must, ये by default है। Urgent delivery why? Because it's either for occasion, as you know, we got the data point kits is either used for some occasion or something like that. So urgent delivery parameter comes like is important to your consumer if you are the owner of your store. तो बजेटिया जी को जब ये डिटेल में अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, हम खाली स्टोर चालू है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ क्यूरेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, तो अभी पता ही नहीं चलता है कि हम नेक्स्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च करें, हमारे फीचर्स क्या होने चाहिए हमारी वेबसाइट पे, ये सब आपको कंज्यूमर बताएगा। स्पेसिफिक स्टोर मतलब दूसरा मोटिवेशन ये है कि मैं फेमस जगह से लूंगा, मतलब दिस प्लेस इज फेमस फॉर दिस, XYZ स्टोर इज फेमस फॉर XYZ थिंग, ABC स्टोर इज फेमस फॉर ABC थिंग. So rather than going to a crowded place, I would prefer some specific location for specific products and I would stick to it then. And ये टारगेट ऑडियंस में इतनी ब्रांड लॉयल्टी या लॉन्जिटिविटी डिफिकल्ट हो जाती है until and unless आपने कंज्यूमर को इतना अच्छे से पकड़ के रखा है एंड रिटेंशन, उसको एवरी टाइम जो जो उसका रिक्वायरमेंट है वो आपके प्रोडक्ट लाइन में उसको दिख रहा है, तो वो रिटेन भी होगा। बिकॉज नहीं तो वन टाइम बाय करेगा बस, क्योंकि ये बहुत ही एक्सप्लोरिंग ऑडियंस है, नया 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 एक्सप्लोर करती रहती है। सो ब्रांड लॉयल्टी के नहीं, आई विल बाय something from Raymond then Raymond, I won't change it, is not the case. Like 40-45, somebody who is, they are very loyal, they have the very fixed brand for a fixed thing and they'll stick to it, but here they are exploring, so you'll have to be very strong in retaining them. Now channels active, Instagram and YouTube are the channels where they are active primarily. First Instagram and then YouTube. Brands preferred, Bewakoof.com, The Soul Store. I've put some names out here. We are not targeting or endorsing any brands here. अभी disclaimer मुझे घड़ी घड़ी नहीं देना पड़ेगा, but still we are not. But yes, the kind of products that we are also dealing in, they are somebody who are leading players in the market, and he is preferring them. This guy is preferring these brands. आपको competitors भी आपको पता चल गए कि कौन है, and ये बहुत ही direct competitors हैं. चलो टेक अनदर कंज्यूमर पर्सोना। एक प्राइमरी हमने देख लिया, मेल ऑडियंस, एक सेकेंडरी भी देख लेते हैं कंज्यूमर पर्सोना हमारा क्या। काजल जैन, अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल बट अ पांडा फैनेटिक, मतलब एवरीथिंग पांडा, आई लव इट, आई वांट पांडा शूज, pajamas, t-shirts, caps, mugs. You, if it has panda, I'll buy it. So because the love for the animal or the cuteness that it has. अभी उस पे किसी का ट्रेडमार्क भी नहीं है, it's just an animal. So how are you really designing, building your product? It's on you. अभी she is an impulsive online buyer and a panda fanatic. Impulsive मतलब देखते हैं खरीद लेते हैं, ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं होती, बिकॉज 500, 600, 700 के रेंज में इतनी ऑब्लिगेशंस भी नहीं होते ना कि ठीक है मतलब देखते हैं, परचेस कर लेते हैं. When you buy something worth rupees 8,000, 10,000, there is a decision making process. You check, you refer, so you cross check with your somebody who has bought from there. काफी प्रोसेस करते हो आप. लेकिन impulsive buying कैसी होती है? देखा, पसंद आया, खरीदा, चेकआउट. She is 21, location गुजरात, doesn't give a damn about the world. So इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि doesn't give a damn about the world. I am happy the way I am and I am fine. Big time foodie and a social freak.
Now, if I doesn't give a damn, I'm not getting in the negative zone. I'm just telling के ठीक है, मतलब मैं if I am a fatso, I am a fatso. If I am a chubby, healthy, if I'm buying such quirky panda merchandise, I'm happy. I don't care what the world is telling. I'm happy on my own. So that type of consumer is this bandi. Then she's a post-grad student belonging to an upper middle class family in Gujarat. So yes, we have middle class, but we have upper middle class people also. She fears missing out on online fads and always stays in trend. Online fads, मतलब अभी ये कुछ नए product का fad आया है तो I should buy this. And if I don't do this, I missed out. Will be the feeling, as I said. And always I want to stay in trend. कि कुछ नया trendy product आया तो even if I have something in my wardrobe, I'll buy it. So ये थोड़ा need वाली audience नहीं है, want वाली audience. I want this. मतलब luxury ठीक है. Need मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है sweatshirt या hoodie. I have it, but still I want to buy it. It's a new trend. It's a new thing. I'll buy it. I'm bored with the old one. Then personality is larger than life. मतलब loud, larger than life. So see how your brand have to be then. Now अभी आपको दिमाग खुलेगा कि मेरी ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए मेरे स्टोर की. उनको तभी अपील करेगा जब उनको दिखेगा ये सब आपके आइडेंटिटी में, आपके स्टोर पे, सोशल मीडिया पे. ये सब अगर उनको नहीं दिखेगा तो दे विल बी डिस्कनेक्टेड विथ योर ब्रांड. सो लार्जर देन लाइफ, loves socializing, boasts of. If I've bought something, I'll tell 10 other people out there, see, this is something I've bought. Expressive, like she's not an introvert again, she is very expressive. Fatso, I mean, theek hai, chubby, loves panda, the bottom line. Channels active Instagram and WhatsApp ज़्यादातर, rather than YouTube, more on WhatsApp and WhatsApp groups, जहाँ पे ऐसे quirky groups भी होते हैं, कुछ फीमेल ग्रुप्स होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं. तो ऐसे ग्रुप्स में भी शी इज एक्टिव टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ना, एग्जीबिशंस हो गया, ऐसे कुछ क्लोज ग्रुप्स हो गए, वहीं से मिलते हैं. यू डोंट गेट सच प्रोडक्ट्स ऐसा इन अ मॉल और समथिंग लाइक दैट. यू गेट, बट इन मॉल यू गेट समथिंग विच इज वेरी नीड और नीड ड्रिवन ज्यादा होता है. ये वांट ड्रिवन प्रोडक्ट्स ऐसे ही जगह पे मिलते हैं. सो व्हाट्सएप पे एक्टिव है. देखो अभी आपको चैनल्स भी पता चल रही है कि आपको आपकी मार्केटिंग किस चैनल्स की तरफ ड्राइव करनी है, कैसे करनी है. Exact persona you have to build for your own product. If you are really keen on making a product that fits in the market and sells, so you have to understand your audience. I'm taking more time in this persona because this is how we have to. आपको सारे आंसर मिल गए होंगे यहाँ पे अगर आप मेरी चीजों को ध्यान से सुन रहे हो तो. Then frustrations. What are the frustrations? Loves quirky products available in foreign stores but can't find in Indian market. So this is the biggest frustration कि यार जो पसंद आता है वो यहाँ पे है ही नहीं, सब फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं और अभी 1 महीना लग जाता है उनको यहाँ पे आने में. कुछ अभी लेकिन बंद हो चुका है, चाइना मार्केट एक्सेट्रा. लेट्स सी. सो दिस इज द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन. फेक प्रोडक्ट्स, कॉमन प्रोडक्ट्स, हार्डली एनी वन स्टॉप शॉप फॉर पांडास. नहीं मिल रहा उसको. उसको चाहिए कि ठीक है, अगर ये डिजाइन में टी शर्ट के लिए ले रही हूँ, मुझे यही चीज मेरी बैग पे चाहिए, मेरे यही चीज मुझे पैजामास पे चाहिए. So नहीं मिल पा रहा है उसको. So she is still struggling with that. Then what are the motivations? She wants affordable, she wants unique products, she wants accessibility. By accessibility I mean in reach. It should not be के दिख तो रहा है ऑनलाइन स्टोर में बट स्टॉक में ही नहीं है, या shipping will take more time, etc. So constant wardrobe update. She wants to constantly update her wardrobe. Want driven, not need driven. Fashion fad. If there is some fad, some craze going on in the market, I'll have to be in the game. Customizing. I love something which is very customized also. ये भी इनका motivation है. But everything panda. So if I get that, I'll be happy. So brands preferred Myntra and other Insta stores. Other Insta stores, like specific pinpoint नहीं कर रहा हूँ मैं कॉम्पिटिटर्स में, बट अदर इंस्टाग्राम स्टोर्स. काफी ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं जो ऐसे क्वाकी चीजें बेचते हैं एंड वो भी आपका मार्केट खा ही रहे हैं. एंड ब्रांड्स प्रेफर्ड मिंत्रा बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ स्टफ देयर. कांस्टेंट वार्डरोब अपडेट करना है तो इतना बड़ा मार्केट प्लेस होगा तो ही इतने प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाएगा. सो
ऐसा है. Now let's see the persona for prints. Now I hope this gave you a fair idea about the consumer. Now everything will be easy. All you have to do is answer your consumer. Let's do that once we move ahead. Now let's see the user persona of prints. I've taken my example here just to be safe. Um, an online content creator and a graphic designer. By safe, I mean I cannot, without permission, it's difficult to put the creator friends. So yeah, an online content creator and a graphic designer. ठीक है, content create करता है ये बंदा, artist है, थोड़ी सी fan following है, wants to sell his merchandise, but don't want operational hassles. सिर्फ creative बंदा है, creativity करेगा. महाराष्ट्र में रहता है, 25 साल का है. So Vivek is a visual designer who wants to explore options on selling his own art online via creative merchandising. So I am someone who is able to create my own graphic design for t-shirts, for other products. I want to sell my own products online. I have some people demanding that also. Okay, brother, why don't you sell me this? Brother, I want this t-shirt as well. I want this mug as well. But he's struggling with the supply. Like, I'm not someone who is an online seller. I'm someone who designs and focus on designs. If I get into the logistics, the supply, etc., I lose my focus on my own thing. So that's me. And personality. So constantly create करते जाना है अच्छी अच्छी चीजें. बिजनेस एस्पेक्ट्स मुझे नहीं पता ये सब के क्या होता है, क्या ई कॉमर्स है क्या नहीं. आई एम नॉट समवन फ्रॉम द ई कॉमर्स और logistics side. So I don't know how do you really operationally run a store or something. Experimenting. Even I love experimenting. I want to give new things to my audience. Constantly upgrading. Industry is upgrading so fast. We have to also upgrade. So I'll need something which is very quick. मतलब ऐसा नहीं one size fit all. वो ले लिया तो वही accept करना पड़ेगा. मार्केट अपडेट हो रही है, मैं अपडेट हो रहा हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करे वो थोड़ा ऐसा समझे ये सब चीज़ों को. Channels active Instagram and YouTube, primarily Instagram and then YouTube. Frustrations, I don't want to print it, coordinate with the vendor, printing क्या करना है, कैसे करना है, पैकिंग करना उसको फिर खुद से, फिर उसको सब प्रोसेस करना, फॉर्मेलिटीज करके उसको डिस्पैच करना, शिपिंग करना. आई डोंट वांट टू डू दैट. ऑनलाइन स्टोर डेवलपमेंट, आई एम अ डिजाइनर एग्रीड, बट वेबसाइट बैठ के डेवलप करना, वेबसाइट का फ्रंट एंड बैक एंड, डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. स्टोर बैक एंड मैनेजमेंट, ऑर्डर आ रहा है तो ध्यान दो, पीछे देखो कि ऑर्डर आ गया है, लोकेशन सही है कि नहीं, कैश ऑन डिलीवरी है कि प्रीपेड है, ये सब चेक करो एंड देन शिपिंग करो. तो एक अपने आप में ये एक टास्क है. इन्वेंट्री इश्यूज, अभी टेक एग्जांपल ऑफ, चलो लोगो से लोगो तक. अभी आई वांट टू सेल दिस डिजाइन, हाइपोथेटिकली टेक एन एग्जाम, सेल करना है. आई कांट शिप, आई कांट प्रिंट 100 पीसेस एंड कीप इट विथ मी. अभी कोई just 10 log 10-20 people are ordering and I'm printing 100, my capital is being stuck there na. So unnecessary ho jata hai, and if it's not moving, inventory is not moving, so it's dead. So rather, I would, it's my biggest frustration. And poor quality, because whenever you want to do something on your own and if there is no quantity, you get such, majorly you get such vendors in the market जो बहुत ही मशीन ड्रिवन प्रिंट करते हैं एंड अच्छा भी नहीं होता, उसका क्वालिटी चला जाता है तुरंत. तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ मेरी ऑडियंस के लिए, बट बैकफायर करेगा मुझे अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो. सो रैदर इससे अच्छा मैं ना करूँ. अगर करूँ तो माई मोटिवेशंस विल बी, आई नीड अ राइट प्रिंट पार्टनर, a right shipping partner, a right web partner, one point of contact, because I cannot deal with so many partners, channel partners. Then timely delivery to fan base, biggest thing. And pandemic has really screwed that up. So best quality, because if I do it, I do it good, or else I don't do it. People will screw me. Invest in demand more than supply. I would rather invest my money in marketing so that I can generate orders. Why would I invest in the printing or the people who can help me in doing all this, or printing machines, etc.? I'm not a printing wala. I cannot put my money in all these things. I can only put my money in marketing. And if I get orders, I need someone who is, who can help me in doing all this. Agar karu to my motivation will be, I need someone who is, who can help me in doing all this. So rather, I would, it's my biggest frustration. And poor quality, because whenever you want to do something on your own and if there is no quantity, you get such, majorly you get such vendors in the market जो बहुत ही मशीन ड्रिवन प्रिंट करते हैं एंड अच्छा भी नहीं होता, उसका क्वालिटी चला जाता है तुरंत. तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ मेरी ऑडियंस के लिए, बट बैकफायर करेगा मुझे अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर करूँ तो
taking care of all this. So I gave you my frustrations, I gave you my motivations. That as a and big agencies also run these focus groups, but I don't know. I understand it's very difficult, but this also helps. Like there will be 5 people like me who will be sitting in a room, creators like you are creators, you are designers, you come in a room, I'll come in a room, let's jam. You will give 10 problems. Okay, I want to keep on launching new designs every day. I'll upload one on the mockup and upload it on the website. So how can I print so many quantity of one design? So there will be somebody else giving some another problem. So there are focus groups gets conducted जिससे पता चलता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए क्या नहीं. एंड आगे आप जब आंसर्स देखोगे ना, क्विकली आपको आंसर्स आ जाएंगे पोजीशनिंग के, वैल्यू प्रपोजिशन के. कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग दिस डेटा राइट. एंड ये डेटा सही मिला तो सब सॉल्व. Okay, now these are my motivations. The brands preferred, I did not find much in India, so I use this Teespring. I used Teespring for all this purpose and मेरा अच्छे से काम हो जाता है. But problem is कि Indian market में इतनी सर्विस नहीं मिल पाती. Same I use Printful also, but same problem कि Indian market में ज़्यादा सर्विस अच्छे से नहीं मिल पाती. And Printful में भी डिजाइनिंग करने के ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं. Teespring बिकॉज वो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा देता है मुझे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से. तो यू नो देयर इज डायरेक्ट कंटेंट क्रिएटर कुछ कंटेंट भी बना रहा है, उसके फैंस हैं जो उसकी मर्चेंडाइज लेना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है टी स्प्रिंग का. नाउ दिस इज मी, दिस इज द कंज्यूमर ऑफ मिस्टर बजेटिया. नाउ बजेटिया इफ रियली अंडरस्टैंड्स ऑल दिस विल सी अरे हाँ यार ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे. एक कॉर्पोरेट को 500 पीस चाहिए वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी गैप है मार्केट में, इंडिया में है भी नहीं कोई ज़्यादा लोग, तो क्यों ना इस पे फोकस किया जाए, इस पे आगे बढ़ा जाए. राइट. सी वन मोर कंज्यूमर persona, यूजर persona, फीमेल भक्ति नायर, एंड ऑनलाइन स्टोर ओनर. नाउ शी इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, खुद का डिजाइन नहीं बनाती, खुद का कंटेंट भी नहीं बनाती, बट इसका खुद का ऑनलाइन स्टोर है. शी विल क्यूरेट द प्रोडक्ट्स एंड शी विल सेल and she will curate the best products. She has a theme store for females and the theme etc is there. She knows what she is doing. If she is not designing on her own, that does not mean she is not doing good. She has a themed store. She knows who she wants to sell. But iske bhi problems hai. Let's see. So not into manufacturing. She is 23 from Bangalore. She is not into manufacturing. She will not make products on her own. She will curate and resell the product. If I tell that this is logo se logo tak, if you have the audience, design audience, I'll give you this, you sell. So she will curate and resell the products. Profitability is important for her. Her motivations are different. So मैंने left hand side में थोड़ा सा crux में दे दिया है. अभी right hand side में देखते हैं कि bio. So she's started as a part-time online reseller selling quirky t-shirts for female target market via Instagram. So the channel she was using was Instagram and she was selling part-time. She started, and now when the business grew, she developed that into a full-fledged e-commerce store and started selling via her store. Now she is full-time into this. She is serious about this business. So this is how you have to know your consumer, their motivations, their sentiments. Only then they will associate with your brand, right? Tagline क्या होगी वो बाद में आएगा. वो टैगलाइन ये सब चीजों का इमोशनली आंसर करेगी. ऑलराइट. नाउ पर्सनालिटी, पैशनेट फॉर फीमेल फैशन, बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है फीमेल फैशन एंड मर्चेंडाइज मार्केट के लिए. बिजनेस माइंडेड है एंड शी इज़ नॉट अ क्रिएटर हु इज़ गुड विथ क्रिएटिविटी, बट शी नोज हाउ टू रन द बिजनेस फुल टाइम. शी नोज हाउ टू curate good products and sell it to the audience. So she has the pakad. Then she is competitive as well. Now because she does not have any, now I may have my own differentiating factor that okay, I am a designer, I focus on graphic design community, I sell to them. She has to be competitive. अभी वहाँ पे कोई मुझे compete करेगा, कम जन compete करेंगे. यहाँ पे तो क्या है, she is also curating, there are 100 people curating, so she will have to be competitive in pricing. नहीं तो difficult हो जाएगा. Then constantly innovating, because the market she is targeting needs constant wardrobe update. So she will also have to constantly refresh the products uploaded.
She's customer focused. Whatever they need, she'll make sure unko mile. Growth mindset. She wants to grow this seriously as a business. She's not someone who is just still doing a part-time gig on Instagram. So she is very serious about this, and she will she'll have his own her own frustrations and motivations. So channels active Instagram and Facebook as well. यहाँ पे Facebook भी आया because there are many Facebook groups, Facebook shops, via which the females purchase. So Facebook is also equally important to her. अभी इनके frustrations क्या है? So the frustrations are कि मुझे अगर constantly innovate करते जाना है, wardrobe update करते जाना है मेरे audience को, तो मैं एक ही डिजाइन का ज्यादा इन्वेंटरी रखूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, चीजें मूव होनी चाहिए, कैश फ्लो मेरा स्ट्रांग होना चाहिए. मैं अपफ्रंट कैपिटल डाल दूंगी एक ही जगह पे, तो मैं मार्केटिंग में क्या करूंगी? सो प्रॉब्लम हो जाएगा. मल्टी टास्किंग टेक्स अ टोल. आई कैन नॉट डील विद दिस लॉजिस्टिक्स कंपनी, द प्रिंटिंग गाय, माय वेब गाय, इतने सारे गाय. आई कैन नॉट multitask. It will really take a toll on long run. Returns and cancellations are my biggest problems. एक तो ये सब करो, then भी returns होते हैं, प्रॉब्लम हुआ डिलीवरी में, कैंसिल होते हैं ऑर्डर ड्यूरिंग द डिलीवरी भी, तो आप क्या करोगे? रिफंड्स, रिटर्न्स, कैंसिलेशंस, बड़े प्रॉब्लम होते हैं जो. एंड शी इज वेरी कॉम्पिटिटिव, ग्रोथ माइंडसेट, प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये सब बहुत मैटर करता है उसको. यहाँ पे देखो अलग फ्रस्ट्रेशंस थे, अलग मोटिवेशंस थे. मैं अब तक तो पहुंचा भी नहीं था रिटर्न्स, कैंसिलेशंस एक्सेट्रा. But it will matter to me also if I'm really thinking to monetize from this. Then wafer thin margins. Because इतना competitive market है तो इसको costing ही इतनी भारी पड़ जाती है, तो इस वो भी इतनी high selling price में रखेगी तो sell नहीं कर पाएगी. So she has to compromise on the wafer thin margins. मतलब बहुत ही minimal margins निकलते हैं. Now what are her motivations? Now controlled costs. मुझे costs का एनालिसिस चाहिए कि हाँ मुझे इतने में पर यूनिट इट विल कॉस्ट मी, एंड इवन इफ आई सेल 100 यूनिट्स, द कॉस्टिंग शुड रादर reduce 5 rupee or 10 rupee rather than increasing. So I want to control my costs. I want better margins. I want to sell in the standard market price only. I cannot demand extra price, but still I want to have better margins plus quality control. I cannot compromise on this, and I want a process via which quality control is being taken care of. Streamlined operations. For example, if I just have to focus on curating the right product, understanding my consumer, and selling them, marketing, I'll have someone who is taking care of the printing, the web, etc. बहुत सारी चीजें जो होती हैं backend की. Streamlined operations. It will really help me scale because I want to really scalable business model. I want to have something that can be put on reputation, that can be put in a process on a day-to-day basis, so that as I grow, I can really build this into a big business. I'm very serious about this as a career. I'm not doing this just for the sake of it. I'll need all this. Then vast variety for consumers. I want to keep on updating my products online, and I'll keep on listing, and you guys have to make sure that when the order comes, you have to print and ship and pack and deliver to them. Then brand building. I need help in the brand tags, the brand packaging, etc. Even that is important for me because I want to tell the people out there that my store is best compared to the others. So right now I'm using this platforms like inkmonk.com or the local vendors who help me procure. Then for logistics, etc., I'm using FedEx, RMX, Delivery, such services who help me ship. Then for everything else, I'm multitasking myself. So how can your product or service help me? So see, अपने को यहीं से पता चल रहा है कि अभी मेरी USPs क्या होंगी, proposition क्या होगा, positioning क्या होनी चाहिए, etc., etc. So it's all about once you build the persona right, and if you I mean, you have to be true, like you have to be honest that yes, I lack business aspects. I'm not good with business side of it. I'm a creative guy, I'll design as a content creator if I'm your target audience. Here, see, I'm not good with designing. I'll need help. I'm good with the business side of it. I understand what you guys are telling me, but I'll need help here also because I want to outsource this. I don't want to do
all this myself. I want to focus on my consumer and my marketing. Here, I want to focus on my design and my marketing. So you have to understand the frustrations and motivations of your target market and target audience, and then you move ahead with the, चलो ठीक है, अभी मुझे ऑडियंस पता है, अभी इसमें ही आपको तो काफी कुछ पता चल गया होगा, पर्सनालिटी एक्सेट्रा. सो मुझे ऑडियंस अभी एकदम थरली पता है मेरी कौन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. एंड नाउ आई मूव ऑन टू द कॉम्पिटिटर्स के चलो कौन है जो ऐसी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं मार्केट में. For the competition analysis, I'll give you this very simple framework. Abhi, see, the only thing that we discussed previously is tough. एक बार वो हो जाएगा ना, all this is not, trust me, it's not that tough comparatively. So evoke store की competition analysis करते हैं. बहुत ही simple framework है कि कौन है, मतलब कौन सी ब्रांड है, known for what, उनकी story क्या है, उनकी pricing parameters क्या है, pros क्या है उनके, अपने लिए क्या opportunity है market में, एंड वो हमारे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर है. कोई भी मार्केट है, इट हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन. समटाइम्स जैसे प्राइमरी ऑडियंस, सेकेंडरी ऑडियंस होती है, वैसे ही कॉम्पिटिशन में इट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नाउ वी हैव टू बी मोर कंसर्न्ड विद द डायरेक्ट वंस, एंड इनडायरेक्ट वंस आर आल्सो देयर. एंड अदर इंस्टा स्टोर्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंस रखी है बिकॉज इवन दे आर ईटिंग आवर कस्टमर्स. बट ठीक है, मतलब वी कांट, उनके ऐसा सब होगा नहीं कुछ, इसलिए मैंने डेटा उनका अभी अक्यूमुलेट नहीं किया हुआ है. सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सी बहुत सिंपल चार्ट है कंपटीशन का चार्ट. लेट्स टॉक अबाउट bewakoof.com. व्हाट इज द कंपनी नोन फॉर? इट इज नोन फॉर quirky relatable merchandise. Relatable, whatever they create relates with the people and it is already quirky and अच्छा कर रहे हैं उन लोग मार्केट में. What is Soul Store known for? The pop culture and licensed fan merchandise. So if I want to wear something of WWF, maybe I really love WWF, I can get something on their website and it will be licensed. They have the license for it. Some Disney merchandise, some other brands. So compared to Bewakoof, Soul Store ने वो market ज़्यादा focus की. Then Myntra is like the marketplace, aggregating all thing fashion. So वो तो अलग ही player है पूरा, and it's indirect of course. So considering Bewakoof and Soul Store as direct right now, let's see. And see, even if you are starting out, if there will be biggies, but they all started somewhere, right? So we need to not worry कि अरे यार इतने बड़े बड़े players हैं तो हम क्या करेंगे. There is always a market. Even if Bewakoof was there, Soul Store ने अपना पाथ क्रिएट किया ना उसके हिसाब से. So you need to believe in yourself, believe in your product, service and brand, and follow these fundamentals. All right, so more or less creative people out there, this is more for the businessmen and entrepreneurs जो ये सुन रहे हैं. But I can't say like this, even you are creatives, you will have to go through this process for your clients, and we'll make sure that you get such projects and that will demand all this. So quirky relatable merchandise, Bewakoof, the pop culture and licensed fan merch, single line में पता चल रहा है वो क्या कर रहे हैं, कोई complicated paragraph नहीं है. A marketplace aggregating all thing fashion. Story, what is the narrative or storytelling that Bewakoof is trying to do? The one who do things differently and create an impact are Bewakoofs. So by them, for them it means that somebody who does not go with the masses and creates his or her own rules is a Bewakoof. People consider them as crazy ones. कहीं ना कहीं Apple से मुझे वो याद आ जाता है. So those who are crazy ones are the ones who change the world. Something in that lines. Then Soul Store simply says follow your soul and do what you love. So follow your soul वाला एक अलग ही उनका storytelling है. Myntra, it's the ultimate fashion destination. Leading player है यार, ये तो पूरा market dominance पे खेल रहा है. So less about some emotional story but more about the dominance. Then pricing, rupees 250 and above, affordable, highly affordable. Bewakoof.com इतने constantly इसके t-shirts designs वो भी 250 300 से start होते हैं. Soul Store 500 and above. मैंने एक मोटा मोटी लिखा, it can be even maybe Soul Store has some which is less than 500, which is okay, but average ये है. Myntra भी 500 and above.
सारे अफोर्डेबल सेगमेंट्स में खेल रहे हैं, अभी हमें हमारी नीश यहाँ पे कार्व करनी है, तो ये सब स्टडी करना जरूरी है. देन प्रोज, बेवकूफ का प्रोज क्या है? फर्स्ट मूवर, दे स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स. ऑनलाइन कम्युनिटी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया कम्युनिटी है इनकी. वास्ट चॉइसेस एंड पॉकेट फ्रेंडली. सो मेन तो यही है कि दे स्टार्टेड आउट अर्ली एंड हैव बिल्ड दैट ट्रस्ट इन द मार्केट. सेकंड, नाउ अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग और प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट जो डेटा है मिल रहा है वो आई एम शेयरिंग. ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत अच्छी है इनकी. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग टी शर्ट्स, दे हैव बिल्ट अ गुड community with the great sense of humor, meme material, etc. So they design these memes and all that, जिससे लोग अच्छा connect हो रहे हैं. Soul Store is very smart, sells on the popularity of the theme. Like already ये theme famous है, Star Wars, public को पसंद है. Let's license the merchandise, let's sell that merchandise. But it's tough, huh? I mean, they have to purchase the license, they have to do so much things to really sell, bring this licensed merchandise to you at your doorstep. So this is what they are focusing on. Leading player in online fashion India, pros, Myntra. I mean, of course, it is one of the leading player if you really consider uh, buying fashion online. So leading player hai, that's that. Pros uska wo hai. Don't complicate it. Don't complicate your competition analysis. Simply एक ऐसा चार्ट बनाने का ट्राई करो. It is not about thesis. So let's not get into that. Abhi, for now, it's just, of course, एक इस पे ही महीनों का सेशंस बन सकते हैं, बट अभी इतना bare minimum important है, is what I'm trying to say. Opportunities for us. Now, what are the opportunities for us? हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने कंज्यूमर स्टडी किया, हमने इवोक स्टोर में थोड़े कंपटीशन भी देखे कि कौन है कौन नहीं. हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी कि यार बेवकूफ सब बेच रहा है, सब ठीक है, बट क्यों ना हम कोई कैटेगरी पे फोकस करें. अगर ये एक रेस्टोरेंट है तो क्यों ना हम सिर्फ बर्गर पे फोकस करें. मुझे एक ये अपॉर्चुनिटी दिखी. दूसरा, अच्छी बात है, सोल्ड स्टोर लाइसेंस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइसेंस्ड थीम्ड बेस्ड मर्चेंडाइज बेच रहा है. क्यों ना हम ऐसा, हमारा ही एक इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट इज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल. हमारा ही खुद का एक ऐसा डिजाइन कैरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी डेवलप करे जो which is loved by people, which is loved by the target audience, and they come here to buy that only, right? So somebody loves Mickey Mouse, they love Mickey Mouse. But what if we are able to create our own such good content, good design, which is not just a graphic design but also a good character storytelling, so that people consider us and come here to buy that. And then learning from Myntra, expansion and scale is also important, and providing multiple varieties is also important. But why not expand in the same category and product line? So this is the clarity that we get, like Jpeg Bhai and Bajetia ji gets after brainstorming. Because uh, if you really, you should not go and create yet another Bewkoof, which is just selling. अभी जो हो रहा था वो सब मिक्सचर था. मिंत्रा भी बन रहा था, सोल्ड स्टोर भी बन रहा था, बेवकूफ भी बन रहा था. सो इवोक स्टोर का कुछ वो नहीं था, एक पोजीशनिंग. अभी आपको पता चलेगा कि नहीं ठीक है, अरे यार पब्लिक ने हमें अप्रिशिएट किया है, पब्लिक ने हमें एक्सेप्ट किया है, सो लेट्स फोकस ऑन पांडा कैटेगरी. लेट्स सी कि हम पांडा को ही कैसे कंटेंट, एक कैरेक्टर की तरह अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. एंड देन हम लोग किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट लाइन में, सो दैट पब्लिक को यहाँ पे वास्ट ऑप्शंस भी मिले. ऑफ कोर्स, बट हम लोग सब नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू बी नोन फॉर एवरीथिंग. सो दिस इज द कंक्लूजन दैट यू गेट आफ्टर एनालाइजिंग योर कंपटीशन. सो similarly, you do this for your prints, and what you get to know is, all right, Teespring is primarily known for print on demand and sell with Teespring. So प्रिंट भी करके देता है, सब करके देगा, प्लस वहां पे आप बेच भी सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. प्रिंटफुल क्या बोल रहा है कि मैं, आप अपनी तरफ से बेचो, बट डिजाइनिंग एंड कस्टम मर्चेंडाइज डिजाइन करनी है तो उसके पास अच्छे फीचर्स हैं कंपैरेटिवली. इंकमॉन्क एक प्रिंटिंग मार्केट प्लेस है इंडिया का, सो वो ड्रॉप शिपिंग या ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है.
Then Teespring ये मैसेज दे रहा है कि अगर people want to turn their ideas into products, business or brands, we are here. We will empower. I have this logo से logo तक in my mind. I want to develop a product out of this. I go to Teespring, they will help me do everything. I just have to focus on my content and my creativity. And they are empowering me to do so as a content creator or as an online store seller also. Coming to Printful, they say कि ये मोर और लेस इस पे ज़्यादा मैसेजिंग कर रहे हैं कि हम वाइट लेबल्ड, मतलब आपके लिए प्रिंट भी करेंगे, पैकिंग भी करेंगे, शिपिंग भी करेंगे, नाम हमारा कहीं भी नहीं आएगा, सब आपका नाम पे. टीस्प्रिंग भी वही कर रहा है, डिनाई नहीं कर रहा है उसके पास भी ये फीचर, बट प्रिंटफुल इस पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है. देन इंकमॉन्क क्या बोलता है? इंकमॉन्क ने थोड़ा सा ये गारंटी दिया है कि सही प्रिंटिंग होगी और स्ट्रीमलाइंड वे में आपका काम होगा. क्या होता है, क्योंकि ये केस में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, फॉल्टर होते हैं, सही आउटपुट नहीं आया, कुछ फाइल सही नहीं था, डिज़ाइन गलत हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो इंकमॉन्क क्या बोल रहा है कि आई डू इट राइट एंड आई स्ट्रीमलाइन ऑल दिस फॉर यू. लोकल वेंडर्स पे मैं अभी नहीं जा रहा, बट है वो भी मार्केट में काम कर रहा है. प्रोस ऑफ टीस्प्रिंग इज क्रिएटर फोकस्ड विद सोशल इंटीग्रेशंस. अभी एकदम फोकस्ड है क्रिएटर्स पे वो कि विवेक के यूट्यूब के नीचे ही मेरा टीस्प्रिंग का स्टोर डिस्प्ले हो जाएगा, अगर, क्योंकि मेरा डायरेक्ट टाइप है यूट्यूब के साथ. विवेक यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करेगा, नीचे मेरा स्टोर का डिस्प्ले होगा. इफ पीपल क्लिक देयर, पीपल कैन बाय द प्रोडक्ट आल्सो. So that is how Teespring is focusing on this creator market. Printful, on the other hand, is more like a full, multiple features to customize. Features options थोड़े ज़्यादा दे रहे हैं वही, compete ही कर रहे हैं directly. Inkmonk is structurizing the unorganized print sector in India. तो in India the print sector is not that structurized, and ये उसको थोड़ा सा streamline and structurize कर रहे हैं, because local vendor से deal करना is a very pain in ass. You may agree. Now, opportunities for us. Now, what are the opportunities for us left? We see that, okay, even we want to be creator focused with print on demand. We love this from Teespring. We are not somebody who is innovating. We are someone who is bringing this thing in India, maybe, or be trying to be the early movers in India. Or maybe, yeah, not the first movers, of course, but the early movers. Then Printful, full stack drop shipping solution is an opportunity for us. जैसे हम एक तो क्रिएटर फोकस्ड हो सकते हैं क्योंकि बड़ी मार्केट बन रही है अभी वो. दूसरा, हम फुल स्टैक सर्विस देंगे, डिजाइन से लेके शिपिंग, प्रिंटिंग, सब वाइट लेवल सेम हम भी सर्विस देंगे. हम इंडियन मार्केट का गैप फिल करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इंडियन मार्केट में और क्या प्रॉब्लम्स हैं. उनको फॉरेन मार्केट्स का आइडिया होगा, बट इंडिया में अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम इंडियन मार्केट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. सो इस तरह नाउ यू नो कि व्हाट आई रियली वांट टू बिल्ड, व्हाट इज माय क्रिस्टल क्लियर प्रोडक्ट और सर्विस. क्रिएटर and e-commerce seller focused, I am creating a drop shipping solution, full stack drop shipping solution that will fill the gap in Indian market. Agreed. Here in Evoke Store, you know, I am creating this panda category focused store. It will expand in the same category as much as possible. It will have other products, but ratio will be this and nothing like it agar yahi hota. But then it's ultimately the business that decides. Develop my own content and IP so that people want to buy this and they will come here only to buy this. So all this comes after analyzing the competition, after analyzing the persona and what people want, right? So then you have to now see कि अरे consumer से बात की, survey किया, इतने सारे problems मिले, persona build किया, but you cannot focus on 10 problems. You cannot go out there and solve all the problems. You have to start with one or focus on one and stick with it for a great period of time. Now, solve one problem at a time and keep it crisp. That's what you have to do for your business. Now, see Evoke Store, it was too cluttered when we started. If you see the brief and everything, you will feel that kitna kuch ho raha tha. And now we have narrowed down.
अब ये जो हम कर रहे हैं यही पोजिशनिंग प्रपोजिशन की तरफ ही जा रहे हैं, तो आप वो मत समझो कि पोजिशनिंग कुछ बड़ा फ्रेमवर्क है। ये करते करते ही वहां तक हम पहुंच रहे हैं। अभी हम इवोक स्टोर बोल रहा है कि मैं वन स्टॉप पांडा शॉप बनूंगा, खत्म। पब्लिक को वन स्टॉप पांडा प्रोडक्ट्स चाहिए, आई डू दैट, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। नो clutter, no complication, keep it simple, silly. So are you able to define your product in a very, or service in a very simplified fashion? प्रिंट्स कह रहा है, आंख भी मार रहा है जेपेग भाई, सेल ऑनलाइन विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री। मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में करने की जरूरत नहीं, बिंदास सेल करो, जब प्रिंट तब करेंगे जब आपको ऑर्डर आएगा। सो ये प्रॉब्लम चलो मैं सॉल्व करता हूँ। स्टोर ने कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग ये वो उसमें भी जा सकता था, बट अभी नहीं, कितना हर प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर सकते। सो this is something that people want. Let's focus on this. People want, and let's go ahead with this. In Evoke Prints, I cannot solve the marketing problem for you right now. Maybe you can have marketing problem also. Okay, I'm not able to market my store. At least all I can do is I can take care of the supply side for you. So you play the 50%, I play my 50% role. Rather, you are playing more. Maybe you are playing 60-70% of the role. I'm playing 30% of the role. However, I believe it's like you are handling demand, I'm handling supply. So we are together. तो अभी देखो कैसे मैसेजेस मिल रहे हैं, आइडियाज मिल रही हैं प्रिंट्स के लिए. So solve one problem at a time. And this is how your positioning should be. So positioning is nothing but what differentiates you. जैसे हमने previous session में तो देखा ही था वो लक्ष्य सिंथॉल एग्जाम्पल, but that's how brands have also done it, the way you are doing it right now. You have to really hit the right target, one target, and stick to that. So what differentiates you? There are 10 categories out there if you go on YouTube, Google, etc., whatever, but I believe वो सेलिब्रिटी ड्रिवन पोजिशनिंग, इमोशनल ड्रिवन पोजिशनिंग, वो बस खाली मुझे ऐसा लग रहा है कि बस होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये 3 अगर आपने समझ लिए ना, इट्स मोर देन इनफ, इज व्हाट आई फील. कि एक तो आप फंक्शनली डिफरेंशिएट करते हो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन. सो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब इज नथिंग बट इवोक प्रिंट्स, कि उसने एक ऐसा फीचर या फंक्शन पकड़ा, और ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड. प्रिंट ऑन डिमांड एक फंक्शन है, फंक्शनिंग हो रही है ना, प्रिंट कर रहा हूं मैं, डिमांड मतलब ऑर्डर आने पे. बस अभी मैं उसी पे मेरा पोजिशनिंग फोकस्ड रखूंगा. वो उसका आउटपुट है कि उसकी वजह से उसको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करना पड़ रहा सामने वाले को, मेरे कंज्यूमर एंड क्लाइंट को. सो फंक्शनल डिफरेंशिएशन होगा आपके प्रोडक्ट या बिजनेस का, अगर आप डेवलप कर रहे हो तो, कि उसमें कोई तो ऐसा एक फीचर या फंक्शन होगा जिस पे आप ज्यादा फोकस करना चाहोगे और उसी में आगे बढ़ना चाहोगे. 30-minute डिलीवरी, फंक्शनल, दैट इज पिज्जा इज पिज्जा. 30-minute delivery is pure functional differentiation in the market. Category and niche is another differentiation in the market, which Evoke Store is trying to do. Category and niche, matlab there is this big pool out there of quirky products. Let me focus on be a big fish in a small pond and focus on this panda category. Nobody will sell pandas the way I do. So that's the category and niche driven positioning which differentiates you from the other 10 stores out there. तो अगर शायद कोई हमें स्टडी कर रहा होगा तो यहाँ पे मिंत्रा के बाजू में कॉलम में डालेगा हमारा स्टोर जो होगा .com, panda.com जो हमारा स्टोर होगा. फिर नीचे लिखेगा known for being a one stop panda shop. स्टोरी बनानी पड़ेगी, क्राफ्ट करना पड़ेगा. सो वो भी कंज्यूमर से ही आएगा, आते हैं उस पे भी. तो इस तरह हमें जो स्टडी कर रहा होगा वो भी डिफाइन कर पाएगा कि हम कौन है. सो यू हैव टू बी सो प्रिसाइज, सो क्लियर दैट यस, प्रिंट्स सर्विस है, एक फंक्शन पे फोकस करता हूं, उसी में मेरी पोजीशनिंग बनाता हूं. स्टोर मैं कोई ऐसे फंक्शन पे फोकस नहीं कर सकता, मैं अर्जेंट डिलीवरी एक्सेट्रा पे नहीं मैं ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज भी होती हैं. बट इतना कर सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में है, विच इज क्यूरेटिंग
procuring, developing, designing, manufacturing also if need be. Such beautiful quirky panda products जो मैं ही बना सकता हूँ, and one stop मेरे पास ही मिलेंगे, बाकी कहीं पे वो कम मिलेंगे, या होंगे तो I'll be the one who will be known for it. So this is how I want to be category and niche driven. Then leaders and innovation is something different altogether. Leaders, either they are category creators sometimes. Now here panda is something not which is innovative. It is there. We are just focusing on that niche. Leaders or innovative products are something that really disrupted the market and brought that thing. Like technology was never so beautiful before. Like Apple really innovated, is now a market leader in that. So वो एक अलग differentiation हो जाता है. If we are talking about innovation or if we are talking about leadership, because that is something which has been done by you and your brand or your product or service. So that is focused on leader and innovation driven positioning. So majorly it is about functional or category and niche. And even if you want to scale, but start with the category and niche as entrepreneurs, it will really help you control a lot of things. Then you talk about value proposition. Now, trust me, even investors, like if you are looking out for funding, if you are going out for some funding opportunities, the differentiation is the biggest factor that your investor will need. Okay, how different is your business? What you are doing and how different is your business? And I've been listening this from many in a community where I'm in, as where there are investors as well, that what is your product, what is your service, what problem it solves, who is your TG, how are you different, and how will you make money out of it. Such simple are the answers. People are simply complicating it and sometimes not able to tell their story. So because this homework is not done, what we have discussed today, and this valuable session that you are getting right now is a part of branding exercise, of course, but will really help you scale another level if you are following all these fundamentals very well. So value proposition, again, कोई jargons नहीं, बहुत simply कि हम क्या अलग ऑफरिंग दे रहे हैं मार्केट में, हमने अब तक वही क्रैक किया. एंड देखा होगा आपने 70% हमारा फोकस कंज्यूमर्स पे था, 30% बाकी सब आंसर्स हमें मिलते गए. The why behind why I should buy from your store is value proposition will answer that. Why I should prefer you. This is the why of your business, value proposition. And positioning is the differentiation of your business. So value proposition में बहुत ही simple framework available है. For किसके लिए है, be very specific. Who, उनको क्या चाहिए, who like who needs, who wants, उनको क्या चाहिए. We offer, हम उनको क्या ऑफर कर रहे हैं, अनलाइक जो दूसरे लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं और हम कैसे बेटर है. So Evoke store का example if you see here, it is for the teenagers in India. Teenagers, straightly put. Okay, we have this age group of 18 to 30. There are 28 to 20 people buying 35 also, but teenagers are our primary target market. It is for the teenagers in India who need quirky panda merchandise. We offer a wide panda product range under one roof. This is our proposition. Unlike other generic stores out there, क्योंकि वो सब जेनेरिक है ना, वो इतना कर ही नहीं पा रहे क्योंकि उनका फोकस एनर्जी मल्टीपल जगह पे है अभी, तो उन लोग वो डेप्थ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं ये कैटेगरी में. तो हम ये डेप्थ क्रिएट करने को जा रहे हैं ये कैटेगरी में. एंड वी आर बेटर बिकॉज प्रोडक्ट इज यूनिक, खुद प्रोक्योर कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल भी हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं. मतलब यहाँ से लिया, यहाँ से किसी का लिया, मार्केट प्लेस नहीं बना रहे, हम खुद ही प्रोक्योर करके सेल कर रहे हैं. तो हम क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान दे पा रहे हैं. इफ इट्स सम थर्ड पार्टी सेलर जिसको मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता हूँ और उसका कुछ बेच रहा हूँ, तो क्वालिटी कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है. आई एम जस्ट एबल टू ऑफर वेराइटी टू माय क्लाइंट्स, कंज्यूमर्स. बट वो सेलर ने अगर कुछ फॉल्टर किया है क्वालिटी में, तो मेरे स्टोर का भी नाम उतना ही खराब होगा. सो ऑफ कोर्स देयर आर स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस, बट मैं स्टोर ये बोल रहा है कि आई विल बी प्रोडक्ट यूनिकनेस, कि ये एक यूनिक प्रोडक्ट पे फोकस करना है.
सेल्फ प्रोक्योरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देना है. वास्ट ऑप्शंस विद इन द कैटेगरी, हम कैटेगरी नहीं छोड़ेंगे, उसी में वास्ट ऑप्शंस देंगे. एंड अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज यस माय कंज्यूमर्स आर pocket money driven and they will need something which is affordable. And timely delivery, because they are using this for their occasions. And अभी आप देख रहे हो सब कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स और मोटिवेशंस को ही आंसर कर रहा है हमारा पोजीशनिंग और हमारा प्रपोजिशन, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहा है. सो evoke stories for the teenagers in India who need quirky panda merchandise. We offer wide range of panda products under one roof. Unlike other generic stores out there, हम बता रहे हैं कि दूसरे लोग जेनेरिक है. We are better because our product is unique. We procure it by our own. We have quality control in our own hands. So we can build this authority in the market in this category. Our options are vast, but within the same category, we are being affordable. We are giving timely delivery. That's the bottom line. This is our differentiation factor, our proposition for you. With Evoke Prints, we are for the creators and online sellers in India. Creators and online sellers who wants to build their own merchandise label. मैं हूँ, मुझे मेरी ब्रांड बनानी है, मेरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, मुझे मेरा एक मर्चेंडाइज लेबल बनाना है. वी ऑफर प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग सॉल्यूशंस. मतलब एज यू नो नाउ हम लोग ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. अनलाइक लोकल प्रिंट वेंडर्स विद एमओक्यू क्राइटेरिया. एमओक्यू क्राइटेरिया मतलब उन लोग तो ये सब प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे, प्लस उन लोग वही ट्रेडिशनल वे में अभी काम कर रहे हैं. गलत कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, हम सही है. वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं. इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, ये अलग फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं जो उन लोग नहीं कर रहे हैं. क्रिस्टल क्लियर. अब आप देखो आपका आपकी प्रोडक्ट का, अभी आप नेक्स्ट सेशन में आओ ना कि प्रोडक्ट का नाम क्या होना, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का नाम क्या होना चाहिए, ब्रांड का टैगलाइन, क्रिएटिविटी, वो सब इट्स ऑल अबाउट, सी दैट्स ओके, बट ये बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है. ये जो होमवर्क अभी हम कर रहे हैं, वो क्रिएटिव वे में कोई टैगलाइन लिख ली, वो क्रिएटिव कुछ नाम दे दिया, वो तो अभी सब ठीक है, बट पर्सनालिटी पे आते हैं हम लोग, टोनालिटी पे हम आते हैं, उस चीज़ों पे भी. बट ये करने के बाद आपकी जो थॉट क्लैरिटी रहेगी आपके वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके पैकेजिंग पे, इट विल रियली हेल्प यू build the right foundations for your business and also scale in that direction. So why are we better? Because we offer outsourced operations. Like Bhakti Nair, we studied, she wanted to outsource everything, usko सिर्फ उसकी चीज पे focus करना है. So we offer that. We print as you receive the order. No tension of printing in bulk. आपको order आया, हम print करेंगे. We pack and ship to your consumer. आप टेंशन मतलब, ऑर्डर आएगा, बैकएंड पे हम ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे साथ. ऑर्डर आया, हमको नोटिफिकेशन आया, हम उसको प्रिंट करेंगे, हम उसको शिप करेंगे, और आपके ब्रांड के नाम पे, हम हमारा ब्रांड का नाम कहीं नहीं डालेंगे, और आपसे तभी कॉस्ट लगाया जाएगा वो पर्टिकुलर एक पीस का, ना कि बल्क में आपको करना पड़ेगा. एंड हम लोग प्रिंट एंड गारमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अडेयर करेंगे. दिस इज आर यूएसपी. सो सिंपली पुट गाइस, नो रॉकेट साइंस. एंड इतना सिंप्लीफाई करने में ही जो ये सब रिसर्च, एनर्जी, टाइम इन्वेस्टमेंट, एनालिसिस लगता है, वो ही इंपॉर्टेंट होता है. एंड ये सब आपको आपका consumers are good with telling problems, but then it is an entrepreneur and creative brains like us who have to then structureize, then solve one problem. You cannot go and solve all the problems. So solution is something that we have to come up with any given day. Now here we discussed roles which are more business and entrepreneur driven, because it is their business, their baby. Ultimately we are out here to help them in the brand building process, but without doing this exercise, things will be haywire, is all we are trying to say. So that's not all, folks, as we always say. In the next session, we'll get more creative and start developing. We'll see now how do you really come up with the name, the copywriting, the brand narrative, the personality, how personality plays an important role in doing all that. And we'll start with the execution part of it, the design execution part of it. So today we executed the strategy part. So I hope it was very crystal clear, very crisp, and in a very simple language. And data, sub data hai. So
Please leverage data as much as possible. Thank you so much, guys. See you in the next session.